I've never said, I don't use the word weakness. I've always said these are developmental opportunities because prime focus is children. जी तो जब आप एक चेंज लेके आते हो ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ लॉट ऑफ पुशबैक, ये वाली फीलिंग आती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम भी गलत होते हैं एट टाइम्स. इन एवरी स्कूल द पेरेंट्स सेट इज अ लिटिल डिफरेंट. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का. आज एक बार फिर हाजिर हूं ज्ञान वार्ता रूबरू में एक बहुत ही जाने माने शिक्षाविद के साथ. ये एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और खुद एक समय में 3 अलग अलग स्कूल्स की डायरेक्टरशिप संभाले हुए हैं. इनकी सादगी इनकी पहचान है और इनका विजन इन्हें औरों से अलग बनाता है. स्वागत करेंगे समर स्टडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर मिस्टर अनुराग सिंह जी का. Namaste sir, welcome to Rubaru. Namaste. First of all, thank you for having me here. I think it's a very big honor for me कि आपने मेरे को बुलाया, and I'm happy that I'm able to go and express my views sitting with you. One of my ex-students, उससे लिए मेरे अब ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि एक मेरा पुराना बच्चा मेरा खुद का इंटरव्यू ले रहा है. I'm very happy for this. Really means a lot to me. Thank you so much for such beautiful words. So, coming to our very first question of today's interview. Being a director, there could be some situations जब बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है decision लेना, because you're handling at the same time 3 different schools. I'm talking about the Heritage Senior Secondary School, then we have Summer Study Hall Kundeshwari School, we also have Summer Study Hall Rising Stars. Times मुश्किल ज़रूर होता है आपको. In every school the parent set is a little different. आपको when you take a decision, it's the umbrella is big, but उसके अंदर आपको pointers जो होते हैं ना वो different होते हैं. जी. And then the good part is, and I really thank my team for being behind me with Mr. Anuj Bhatia and Summer Study Hall, who's looking at both even for overlooking the Rising Stars, as well as Arpan Sharma and the Heritage. So I think they know the pulse. That team, जो teamwork है, then that strength, they are my strength. So they make it a lot easier for me when it comes to the decision making. वो check भी कर देते हैं मेरे को. It's not that कि अगर मैंने बोला है तो होना है. But if it's not right, it's not right. They will not agree to it, because at the end of the day, what do we want? We want something good for our students. बिल्कुल. हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, हमारे टीचर्स अच्छा करेंगे, हमारे टीचर्स अच्छा करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली अच्छा करूंगा, मेरे स्कूल्स अच्छा करेंगे. दैट्स इस फंडे से मैं अपना स्कूल्स चलाता हूं, बिकॉज प्राइम फोकस इज चिल्ड्रन. जी, टीचर्स की आपने बात रखी तो मेरे को एक बात याद आई, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस. चाहे बात समर स्टडी हॉल कुंडेश्वरी की हो, चाहे बात हेरिटेज की हो, आई हैव ऑब्जर्व दिस कि वहां के टीचर्स दे आर सो स्टेबल. आई मीन 10 years, 15 years. I need to touch wood before you listen. मुझे लकड़ी चुनिया, I want to touch wood. I just, back of your. Yes, I would touch wood for that. And see, it is you. Once the teacher is with you, understand the fact. And this is all. हमेशा मैंने ये बोला है, चाहे वो बच्चों के लिए बोला हो, चाहे वो टीचर्स के लिए बोला हो. एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं. जी. 8 घंटे बच्चा सोता है, 8 घंटे वो अपने घर में होता है और 8 घंटे ही वो स्कूल में होता है. जी. So the kid, apart from the sleep time, or even the teacher for the matter of fact, is spending enough time with the children or the other people in school or at their workplace. So it's almost like a 50% scenario. Right. So we have to stop looking that employer-employee relation has to be there, agreed. But कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच भी होता है, which is not only from my side. It has to be reciprocated from the other side as well. जब वो होने लगता है, I am telling you, you are reaching a good position, and that is what I try to aim at, not only for my teachers but also for my children. So as a director, कभी ऐसा हुआ है that you had to take a decision, but उस time वो बड़ा unpopular decision रहा for all 3 schools, but later on it became like as a fruitful decision? होते हैं, but again I will say कि I can't pinpoint on a simple incident, because we are not open to change. तो जब आप एक change लेके आते हो all of a sudden, there is a lot of pushback. But that is when you need to make people understand why that change is coming in. It's a slow and steady process जो आप शुरू करते हैं. कभी कभार क्या होता है कि when we think about these situations, और हम लोग इस तरीके के decisions लेते हैं, तब
ये वाली फीलिंग आती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम भी गलत होते हैं एट टाइम्स. सो यू हैव टू बी मैन इनफ टू, अगर आप गलती कर रहे हो तो टेक योर ब्लेम, टेक योर मिस्टेक, मेक लेट एवरीवन नो कि आपकी गलती है, एंड मेक दोस चेंजेस. बट आई हैव ऑलवेज सेड एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. उस गलती से भी आपकी कहीं ना कहीं सीख होती एक है. होप होता है, एक सीख होता है. That's really beautiful answer. I have one situation for you. Let's assume Summer Study Hall Kundeshwari, the Heritage Senior Secondary School, and Summer Study Hall Rising Stars. Let's consider all these three different schools as students, three different students sitting in your one classroom. So how would you define each personality? See, अभी first of all, I will put Rising Stars aside. Okay. वो छोटे बच्चे हैं, right? So that's basically a primary setup. So उनको इधर वाले बड़े वाले स्कूल्स में डाल के, I think you're being a little, आप justice नहीं कर रहे हो, because they're still growing. As the name suggests, they're rising stars. Rising Stars. Right? Now, again, when someone from Heritage and someone from Summer Study Hall is sitting, for me, prima facie, जब मैं पहले लुक करूंगा, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, वो हमेशा मेरे बच्चे रहेंगे, वो मेरे बच्चे हैं. Then I would need to understand कि पर्सन ए को क्या चाहिए और पर्सन बी की क्या नीड है. And then I would try to put both those, things together and try to say कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, वो होगी जो दोनों को सबसे ज्यादा जरूरत है. As per their अगर requirement. हाइपोथेटिकली पब्लिक स्पीकिंग, दोनों की पब्लिक स्पीकिंग वीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दोस डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज. आई हैव नेवर सेड, आई डोंट यूज द वर्ड वीकनेस, आई हैव ऑलवेज सेड दीज आर डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज. तो वो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगा. तो उसी तरीके से सारे के सारे पुटिंग अपॉन दोस पॉइंट्स जो उनकी नीड्स हैं, जो कॉमन नीड्स हैं, पहले उनको टारगेट करूंगा. देन आई विल मूव ऑन टू द इंडिविजुअल नीड्स. And that's when I will be shaping the future of these children. So that's the process how you will execute in a way. Of course, कई बार हम कुछ बहुत सारी ऐसी कोशिशें करते हैं that we get to face a failure. As per you, or I would love to know one incident or any आपका कोई ऐसा memory रहा हो that yes it was a failure for you, लेकिन इस failure से आपने सीखा बहुत कुछ. So that message I want you to tell to our audience, to your students, including me. I've had my share of failures. बट जैसा मैंने पहले बोला, एवरी फेलियर इज नॉट अ फेलियर फॉर मी एनी मोर, इट्स माई डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी. मैं उसके अंदर से भी वो पॉजिटिव्स निकालता हूं कि क्या मैं और अच्छा कर सकता था. I'll give you a simple example. When before I moved into the education line, I was working with the corporate world. I was leading the healthcare vertical with a company called Genpact. I was the HR head for the training and HR functions. I had a span of close to about 7,500 people under me. So prior to that, I was working with this company called Dell and stationed in Chandigarh. I was doing fantastically well. But जो मेरा मैनेजर था ना, he wanted to replace me for obvious reason, because मैं कहीं बाहर से आया था, वहां पे काम कर रहा था, वो local people wanted to get there, whatever. मैं घबराने लगा था ऑफिस जाते हुए कि मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरा किस चीज पे बैंड बज जाएगा. So my manager, at that time I was a manager, and my assistant vice president, he actually called up my boss. मैं सिर्फ चंडीगढ़ में था, बट मेरी सारी रिपोर्टिंग यूएस में हो रही थी. I was making big time money for the company. I was saving, not making, I was saving them a lot of money. I was getting awards directly from Michael Dell, manager of the quarter, manager of this, but local at a ground level, I was very very scared. मैं बहुत डरा हुआ रहता था. नई नई शादी हुई थी. No, I was not scared of her. So, it is more to do with, your life is new. Right. Your career is new. And then problems आ रही हैं क्योंकि आपका मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा. I was staying in office for 12 hours and still डर लगता था कि पता नहीं किस बात पे गेम बजा दिया जाएगा. Corporate world is like that, so but not to be scared, it's only to make you a lot stronger. So that was after being so successfully well, I took it upon me and I walked up to my manager. I said, "आपको मुझसे problem क्या है?" And he said, "I want to replace you." I said, "Then speak to जो हमारी process owner होती थी, US में बैठती थी lady, Mrs. Leopold." I said, "You speak to her."
वो रिप्लेस कर देती हैं तो आई एम ओके। उन्होंने माय बॉस कॉल्ड अप, पिक्ड अप द फोन, कॉल्ड अप मेलोनी एंड शी सेड जब तक अनुराग सिस्टम में है नो वन विल रिप्लेस हिम। सो देन ही वांटेड मी टू बी आउट ऑफ द सिस्टम। हाँ, that सो आई एक्चुअली, सो हमारा वहां पे एक सर्वे होता था। सो आई सेड आई विल बी अ पार्ट ऑफ द चैंपियंस क्वाड्रेंट। आई टुक इट लाइक अ चैलेंज। आई सेड चैंपियंस क्वाड्रेंट में आऊंगा, उसके बाद डिजाइन मारूंगा। And I did that. And I did that from a manager. I left that company. I went back to a different company. But because मेरे को वापस जाना था, तो I took a designation lower. Because I wanted to be out of that company. You know, it was that. So I wouldn't say it was a failure. But then that taught me a lot. It taught me a lot. It made me a better human being. It made me. When it came to work, I was very aggressive initially. चाहिए तो आज चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। Things can't wait. ये process होता था मेरा। But I think that taught me. But that was, I think, very positive approach, I must say. क्योंकि आपने corporate world की बात करी, तो मैं आपके students का जिक्र करना चाहूंगी. Of course, your students, so many students out there, you know, they're working in corporate sector. हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी situation they might be facing. आप उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे through our ज्ञान वार्ता? Anyone who's working in the corporate or anyone who's working anywhere, believe in yourself. Because आपको सब पता होता है कि you are your best critic. मैंने हमेशा बोला है, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। I'll give you a simple example. हम क्या कहते हैं जब हम घर जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं एग्जाम कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। Right. पर अंदर हमारा बैंड बजा हुआ है कि हमें पता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। Then जब आपकी मार्कशीट या आपका रिजल्ट बोर्ड पे लगता है, जी, I'll give you a simple example. Because you want to show the world, आपकी उंगली ऊपर से नीचे चलती है और आपकी निगाहें नीचे से ऊपर जाती है। That's, I think, very relatable. Everyone's done it. सबने किया हुआ ही है। उंगली, क्योंकि दूसरों को दिखाना है कि ऊपर 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 ऊपर, नीचे से देखना नीचे से शुरू हो रहा है, फिर एकदम से वहां से नीचे उंगली जंप कर जाती है। और यार यहाँ तो ये this was not done. I didn't expect that. My kids said the same thing to me. कि क्वेश्चन पेपर ही हार्ड आया था, सभी का अच्छा नहीं गया था। We try to cover it up in that way. Now moving from corporate back to the education segment, ऐसा कोई rule that you would like to remove from education system, Indian education system, and one rule that you would like to add into education system? Not one, there are very many, but yeah, the most important thing that I would want to add is, आज की तारीख में क्या हो रहा है, हम रट्टा मारते हैं, पेपर जाके देते हैं, और what are we focused on? We focus on marks. True. मैं भी खुद भी, मेरे भी आप, and I'm not going to deny the fact that कि जब मैं अपनी होर्डिंग्स जो लगाता हूँ, कि उसमें भी अपने मार्क करता हूँ, पर are marks that important? Yes, to a certain extent they're important, but are they that important? No, they're not that important. हमें मार्क्स क्यों चाहिए? Because बगल वाले पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए हैं, शर्मा जी के बेटे की। चलो, I don't want to say any name, but that's what it is. Simply for the fact that today I'll get a 99% and still I have to give a CUET, right? For college? Right. तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? So that's what I keep telling a lot of parents also. My main focus, and this is something that I've been started doing in the last 2 years, is more than marks. ठीक है, marks है, we have to survive because of marks. Not only our parents, but even when my son last year did his 10th boards, I asked him marks कितने आए, but never pressurized him for he got his 85 plus. I said I'm happy because he's more of a sportsman. For a sportsman, getting that kind of a thing is I was very happy. Touch wood again. But दिक्कत कहाँ पे आती है? हम पढ़ा जरूर रहे हैं, क्या हम नॉलेज बेस पढ़ा रहे हैं बच्चे का? That is what is important. Knowledge बढ़ानी is most important, because today when we go ahead and give a board exam, we come out, we are blank. That's true. We don't need to do that. We need to figure out where I want, मेरा जो main purpose है कि मेरा स्कूल का हर बच्चा, जब मैं उससे कोई बात करूं या कोई भी उससे कोई बात करे, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ज्यादा बात करे, पर उसको एक बेसिकली एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए उस बात का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर नॉलेज बेस बढ़ाना है, रट्टाफिकेशन खत्म करना है।
That is why in most of my schools I've got the kind of courses that I'm doing on be it personality development. It is more of, brain game, like mental maths. I'm doing mental maths. So not very many people know that I'm a CBSE resource person, and I go ahead and take a lot of trainings. One of my biggest concern was when they made me resource person, I said मैं उधम सिंह नगर और उत्तराखंड में कोई training नहीं लूँगा, because being from here they will not take me seriously. That was the biggest concern. So I go a lot outside. I'm taking a lot of trainings at Bangalore and Pune, and I don't put up anything on anywhere. So and that's when even there I tell them when I'm doing all these things, I said सबसे important है वो वाली चीजें करो जिससे आपके बच्चे का knowledge base बढ़े. बिल्कुल. And I'm not taking teachers training, I'm taking management की training, and I'm taking principals की training only. वहाँ पे मैं ये वाली चीजें करवाता हूँ. So last year I had gone to Australia to meet my sister, and वहाँ पे I got talking to one of the government schools वाला थे उनके. They've got public and private schools. So दीदी के सामने एक थोड़े से दूर पे एक public school है, तो I went and started speaking to one of those principals there. So they said जब से हम mental maths लेके आए ना स्कूल में, हमारा बच्चों का जो ग्राफ है वो बड़ा है. I tried that last year in my smaller classes. मेरे को बहुत फर्क पड़ा. लोग बाग अपना दिमाग लगाने लगे. Because आज की तारीख में अगर देखो क्या हो रहा है, हम इवॉल्व हुए मंकी से. अगर कभी किसी ने वो ग्राफ देखा होगा, तो बिफोर वी एक्चुअली बिकेम ह्यूमन हमारी गर्दन नीचे थी. नाउ आफ्टर ह्यूमंस, थैंक्स टू अ फोन, हमारी फिर गर्दन नीचे है. हम पूरा एक सर्कल लेके वापस जाने वाले, इंक्लूडिंग मी. मैं भी जब खाली होता हूँ ना, आई जस्ट पिक अप माय फोन, न्यूज पढ़ ली, रील्स. एवरीवन इज डूइंग दैट. This is, we have to start asking kids to start using their brain. Things like mental maths, aptitude, these aptitude type of questions. Once you start doing that, things will improve. And I tried it last year with one class of mine with mental maths, and it worked. I'm going to do again this year. इस बार भी कुछ aptitude वाला. In fact, I'm going to go back. I'm sitting with this team right now. I'm going back right now and to the school. वहाँ पे मैं बात करूँगा, वही aptitude पे ही focus करूँगा कि वे छोटे बच्चों के लिए aptitude type of questions जहाँ पे उनको अपना दिमाग लगाना. Brain use हो उनका. Find the similarity between you. आते ना जी 2 4 squares दे दिए, squares और अच्छा इसमें similarity. दिमाग तो लगाओ. Right. That's what I want. Recently, Samustrati group of institutions conducted this stargazing event also. Yes. What was that? So उसका जो मेन पर्पस था ना, हम we wanted kids to know what are stars. Like things like which we हम स्टार तारे देखते हैं, वाव कितने अच्छे लग रहे हैं. Right. तो आपको पता है वो that is almost 800 years पुरानी व्यू है. तो अगर ये स्टार खत्म भी हो जाता है ना, we'll only get to know after 800 years. So what we are seeing in the stars depends on how close it is. Be it a 54 years minimum, उतना ही रहता है 54. तो अगर वो खत्म भी हो जाता है, हमें probably 50 साल बाद पता लगेगा कि वो स्टार खत्म हो गया. हाँ, we'll be able to see the exact star. But जब so like things like okay, it's a blue star, it's a new star. It's a red star, it's a dying star. कभी we never knew about that. ठीक है, मून देख रहे हैं. Actually हमने ये भी तो बहुत देखा ना, वो रहे दादाजी, ये रही दादी जी. But that's true. That is true. See, more than the Indian culture, I think it's that family connect that we have. Right. We always want to be close to the people we love. जी. So now especially our elders, when they pass away, हमारी थॉट प्रोसेस ये कहते हैं ना कि उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे. वो ऊपर बैठ के हमको आशीर्वाद दे रहे हैं. That's why we say that. I think students need to know कि there are two concepts. दादाजी भी हैं, and there are other concept of our solar system as well. तो उसी का एक पर्पस था for the stargazing event. In fact, हमने बच्चों के लिए क्या किया था? We had taken the kids to Ramnagar, where the skies are a lot clearer in the month of November. Okay. And that was the time, वो वाला period ऐसा था that around the 20th of November to the 25th, 26th of November, जब आपका meteorite showers were on, they were actually the peak season for that. तो हम तब बच्चों को वहां ले गए थे. So then the parents came back to us कि सर हमें भी देखना है, बच्चों ने वो करें. तो तब ये वाला प्लान इसीलिए किया गया था. Just for the parents, because more than the kids, the parents were excited.
And you know, I've always said, मैं हमेशा कहता हूँ कि education system जो है ना, it's like a three wheel, ऑटो और ई रिक्शा. जी. जो फ्रंट व्हील है ना वो बच्चा है, और जो पीछे के जो दो व्हील्स है ना वो पेरेंट है और टीचर्स. School is the body of the What a auto. structure you have made. Right. Very nice. Now if the kid falters in front, पीछे से पुश नहीं मार सकते. Right. If the parent or the teacher falter, any of them falter, तो फिर वो आगे नहीं वाला चलेगा, function नहीं आगे वाला करेगा. फंक्शन नहीं करेगा. तो ये पार्टनरशिप है. इट्स अ थ्री वे पार्टनरशिप बिटवीन अ स्टूडेंट, अ पेरेंट And a teacher. और अ चाइल्ड एंड द Teacher. टीचर्स बेसिकली. तो जहां पे भी आपका एक भी फंक्शन फॉल्टर किया ना, आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. एंड दैट इज व्हाई आई लाइक टू इन्वॉल्व ऑल माय पेरेंट्स in anything that I do in the schools. And I think that was the reason you also invited parents in this stargazing event. The Stargazing event, उससे पहले हमने एक थोड़ा सा जो हमारा वंडर ब्रेन का प्रोग्राम चलता है on the personality development. We picked up a lot of kids, even चाहे उनको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना था आके स्टेज पे, और हमने उनसे आके बुलवाया. हमने उसके लिए भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया था. एंड दिस वाज जस्ट about 15-20 days prior to this event. And I think this is something which is really required in school, and or I must say Indian education system. So that is something you and your whole entire management team doing a good job, a great job. This is really required. जब पेरेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरत होती है. मैं हमेशा ही सबसे कहता हूँ कि एक विनती है कि प्लीज पेरेंट्स को अपने बच्चे की पढ़ाई में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता. आई लेफ्ट मैथ्स इन क्लास 10. मैं अपने बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, पर मैं पूछ तो सकता हूँ कि हाउ इज इट गोइंग. Right. दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. Taking two students again, because I have a lot of situations for you to ask. There's one student who is, let's assume, 95% scorer, but with weak character. And then there is another student with 75% scorer, but with ethical values. Whom you would invest more in, and why? Why should I give someone more time? दोनों ही मेरे बच्चे हैं ना. Very smart answer. Right? So the one who has he may be 95% but has a weak character. The second person is scoring 75 but a strong character. The person with a 95, now let's focus on the marks, can help the 75 get to a 95. The kid with the strong character can help the person with the weak character, right? Right. So I have to invest more than me. It is that leap of faith जो मुझे लेनी पड़ेगी कि मुझे इस पे भी भरोसा रखना है, मुझे इस पे भी भरोसा रखना है, और मुझे दोनों को साथ लेके चलना है. That's really beautiful. Okay, as a director, for you, what is the most lovely moment, I must say, जब annual function होता है, जब बच्चों के board results 100% आते हैं, या फिर when you're any student like me, you got to meet after 10-12 years. What out of all these three? Or something else? तुमको ज्यादा खुश करना तो कह दूंगा ये बहुत अच्छा मोमेंट है. But not to take anything away from anyone. So this is a very, very beautiful moment when I see my older students coming up to the school, meeting us. You know, अंदर से एक sense of pride मिलती है. जी. एक पता है, maybe because आप अपना कुछ ना कुछ छोटी छोटी झलक उनमें देखते हो. Right. When I've also said that एनुअल फंक्शन, क्योंकि बच्चा प्रिपेयर करता है, वो स्पीक पे लेके जाता है और परफॉर्म करता है, सब कुछ करता है. I myself have performed so many dances. डिफरेंट इट्स चैलेंजिंग मोड्स होते हैं. Right. बिकॉज परफेक्शन इज समथिंग दैट वी रियली वर्क ऑन. वी ट्राई टू बी द बेस्ट. एंड तो वो भी एक मोमेंट होता है. एंड रिजल्ट तो ऑफ कोर्स जब आपका जब बच्चा आपका पास आउट होके निकलता है और 100% बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा तो हम कर रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं. Heritage also gave state topper, Uttarakhand state topper. So that year was a very good year. So both the schools gave state toppers actually. Right. That was so. Ambika got a 99.4 in the Heritage. That time it was Summer Study All Girls School. In the top 5. While Ragini got the best 5, 99.4. Okay. So that was the difference. Then after that, Ragini got 100% in CUET. Wow.
एंड दैट ईयर उसके उस साल का मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा. हम 99.4 पे तो खुश हो रहे थे. हमारी एक मैम है, आई वोंट नेम हर, गोलू मोलू सी मैम है. नाउ यू कैन फिगर आउट हू शी इज. been there since almost day one. I got it. She came and she said, she took a boy's name and said, "Isko first division aa gayi." She was more happier for that kid because that kid was really, really weak. He was dyslexic. Okay. और सब टीचर्स ने उसके साथ मेहनत करी थी. तो जब उसके अबाउट 62% आए ना, आधे से ज्यादा टीचर्स जिन्होंने उनको, जो इनफैक्ट ऑल द क्लास 12 में से जिन्होंने टीचर्स ने उसको पढ़ाया था वो कूद रहे थे, वो जंपिंग विद एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके फादर ने ना पूरे स्कूल में मिठाई बांटी थी. वाओ, हाउ स्वीट. ही वाज सो हैप्पी कि बिकॉज हमने एक चीज हमारे में है, हमने किसी को स्पेशली 11th में अगर आपको साइंस लेनी है, एक बार हम डिसवेट जरूर करेंगे कि आपकी अगर परसेंटेज नहीं है, पर अगर आपको करनी है तो फिर वो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि आपको आगे But I लेके think जाना. that's what makes it different from others कि आपने कहा कि वो बच्चा जो इतना ज्यादा वीक था, he got into this first division वाली कैटेगरी में because of your teachers, their efforts. That is something that you have achieved in these years. No, I would say it's not achieved, it's that hard work that the teachers put in. But in Achieve your में तो करके हो गया ना. in your देखो, direction, under your नहीं, direction. No. I'm also learning from Tamam, yeah. From her, because her presence also in school makes a lot of difference, because बिल्कुल. she's been there, she's been a stalwart in the education industry in Kashipur for I know more than 30-40 years now. So मैं तो 10-12 साल तो कुछ भी नहीं है. For children like us, so we would say, let us say this. So I had to try to put a lot of her learnings and my corporate learnings and put it together तो कि बच्चा मेरा सक्सेसफुल हो जाए and be prepared for the outside world, जो हम नहीं थे. Right. क्योंकि हम हॉस्टल वाले थे, हम पढ़े थे, हमने क्या सुना था कि कॉलेज इज ऑल अबाउट फन एंड गेम्स. 75% आए 10th में, इतने खुश थे, कोई कहता बिल्डिंग से कूद जाते हैं. 12th में 90% आए तो दुखी हो गए, एक आध % और हो जाता तो 91 उसमें आ जाते. then faced first day college. I failed first day college because क्या सुना था, college is all about fun and games. Right. Even still we do this and but ये था कि वो उसको कभी मुड़ के नहीं देखा. That was एक बार था, फिर आगे ही देखा ना कि it happened for the first time and it has to be the last time. But because you have discussed about your college days, I think this is going to be my last question. If let's assume there is one Anurag Singh who is 20 years old, and then there is this Anurag Singh who is this current Anurag Singh. If he would ask something, he has to ask something to this Anurag, and he has to answer to this Anurag. What would be that question and answer? So the younger Anurag would ask the elder Anurag that whatever you are doing, are you doing it to the best of your ability? That's the question Right. that the younger Anurag would ask. Because as I said, हमें अपने अंदर पता है कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कितनी हम सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. So that's the question. वो अपना अंदर ही रहेगा. And this Anurag would probably ask the young Anurag कि मैथ्स नहीं छोड़नी चाहिए. That's a deep message for all the maths haters. Me, one of those. Yeah, I had bio in class 12. इसलिए नहीं ली क्योंकि bio पसंद थी, इसलिए क्योंकि मुझे मैथ समझ नहीं आती थी. My son did the same thing, and I actually asked him. So I said, वैसे बेटा मैथ्स तो लेनी है, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई बात कॉलेज में और मेरे MBAs में and for that. So he said, Papa, I want to do bio. So I said, are you taking bio because you like bio, or you're taking bio because you don't want to do maths? So I was just waiting for the response. He says, well, I like bio. उसका मेरे पास कोई response नहीं था. So at the end of the day, he says, I like bio. That's a message for all people like me who did the same mistake. But thank you so much, sir, for your time. I think it was a very productive session with you. All our viewers have got to know a lot of things. फिर चाहे वो future perspective से हो, current scenario से related हो, and of course we also have discussed a lot of things about your past as a director, your decisions, your failures, your success, everything. Thank you so much. It really means a lot for us, for our channel, for all our students. And last thing, any message you would like to give?
Continue the good job, guys. I think you guys doing a fabulous job, and my best wishes will always be there with you. So keep it up. Kudos to you guys. Keep up the good work. Yeah. Thank you so much. Really And means thank a you lot. so much for having me. It's been a pleasure. Thank you so much. Thank you.